व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो पे। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे मेरा डाइट के बारे में, बट कंप्लीट डाइट नहीं होगा, सिर्फ हम बात करेंगे मेरा प्री वर्कआउट के बारे में। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं कभी कौन सा मील कभी कोई मील रखे मैं ले रहा था एंड थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहा था खुद के ऊपर रखे। एंड अभी जाके फिर से मेरे को एक मील बहुत पसंद आया है। एक्चुअली खाने को तो बहुत टाइम से मैं मील को ले रहा हूँ, बट अभी जाके थोड़ा टेस्टी लगने लगा है। ओके, थोड़ा कुछ मैंने डिफरेंट किया, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। एंड एक्चुअली मील है पोटैटो एंड चिकन का। एक्चुअली हमको प्री वर्कआउट में लेना चाहिए थोड़ा कार्बोहाइड्रेट डेंस है। ओके, एंड उसके बाद थोड़ा प्रोटीन भी। दो टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक होता है सिंपल कार्ब्स, एक होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ओके, एंड सिंपल कार्ब्स पे पड़ता है हमारा वाइट ब्रेड, वाइट राइस, पोटैटो, बनाना। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे पड़ता है ओट्स, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस एंड स्वीट पोटैटो। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से सिंपल कार्ब्स एंड प्रोटीन को मिला के आप लोग अपना प्री वर्कआउट बना सकते हो। प्री वर्कआउट मील जिसपे पड़ता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या क्या पड़ता है सिंपल कार्ब्स पे। तो उसको मिला के आप लोग कभी चिकन एंड वाइट राइस, कभी चिकन एंड पोटैटो, कभी ब्रेड एंड एग, ओके वाइट एग, एंड कभी कभी बनाना एंड चिकन, कुछ इस टाइप से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को मिला के आप लोग अपना प्रिपेयर कर लो। उससे आपको बहुत ज़बरदस्त गेन भी होगा, ताकत आएगा, सब कुछ होगा। ओके, पंप मिलेगा, वही सब कुछ वही है। तो अभी हम जाएंगे एंड हम बनाएंगे हमारा प्री वर्कआउट मील, जो होगा थोड़ा टेस्टी टाइप के। बहुत टाइम से मैं ले रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट आजकल थोड़ा टेस्टी होता है एंड पहले उतना टेस्टी नहीं होता था। क्योंकि मैं पहले क्या करता था, सिंपल आलू को बॉईल करता था, उसके बाद चिकन को थोड़ा फ्राई करके ऊपर से थोड़ा नमक डाल के सिंपल खाता था। उसके बाद से क्या होता था, उतना टेस्ट नहीं आता था। ओके, एंड खाने में दिक्कत होता था, थोड़ा खाने के बाद ही मतलब बड़ा बड़ा फील होता था। बट आजकल थोड़ा टेस्टी होता है। उसके बाद से 400-500 ग्राम आलू एंड 150 ग्राम चिकन भी बहुत आसानी से खा सकता हूँ मैं। उसका वजह अच्छे से बनाने का तरीका है। ओके, सो गाइस, बन चुका है हमारा चिकन एंड पोटैटो का रेसिपी। कुछ इस टाइप का है, देखने में बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है, बट खाने में कुछ भी नहीं होता है। इतना अच्छा होता है कि आपको भी थोड़ा आदत होता है खाने में। ओके, तो आई होप पहले खाता हूँ। हाँ, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा अभी तक का वीडियो। ओके, मतलब थोड़ा कुछ मैंने आपको प्री वर्कआउट के बारे में बताया, थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जाके। एंड हजुर हजुर दाई, गैरेज बंद था ना दाई तपाईँ? तो गाइस एक कल आया था कि अभी हमारा गैरेज बंद है। हमारा मिस्त्री भाई लोग अभी घर गए हैं ईद के लिए। ओके, तो इसके बाद से गैरेज बंद था है ना, त्यही भएर हो। सो त्यही हो गाइस है। यदि अब नेपालीमा बोल्छ हल्का, यदि तपाईँहरूलाई पनि मतलब हल्का गेनिङको लागि डाइट चाहिएको छ भने तपाईँहरू पनि यस्तो खान सक्नुहुन्छ। ओके, मतलब राइस र मासु। ओके, कभी कभी के भन्नु फेरि सरी, आलु र अन्डा, आलु र मासु। ओके, सो सस्कान सब चिज खान सक्नुहुन्छ। अनि म धेरै मेरो नेपाली दाजुभाइहरूले भन्नुभएको थियो होइन, मतलब नेपाली पनि बोलौँ भनेर म बोल्छु है। त्यही हो, मतलब पहिलेदेखि हिन्दी बोल्न थालेको, त्यही भएर हल्का उ भयो, तर त्यो आइहाल्छ नि, मतलब नेपाली अफकोर्स जय नेपाल। तो सो गाइस त्यही हो। ओके, तो आप लोग भी कुछ इस टाइप का डाइट ले सकते हो। कैलोरी डेंस उतना नहीं बोल सकते, कितना है इस पर कांसू मैं जस्ट सेकेंड है कि जस्ट सेकेंड, मैंने इधर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। तो इतना 250 ग्राम कैलोरी हमको मिलता है चिकन से। ओके, तो बट फ्राई करने के बाद थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड 412 ग्राम हमको आलू से मिलता है, तो टोटल हुआ 662। इतना कैलोरी हमको मिलता है। एंड प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा मिलता है, चिकन से ही सिर्फ अराउंड 46 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ओके, एंड आलू से भी अराउंड 6-7 ग्राम मिलता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आलू से बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऑल्सो फैट उतना नहीं, बट ठीक ठाक है। ओके, तो सब कुछ ऑन पॉइंट है। तो आप लोग ये मील ज़रूर खाना। एंड ट्रेनिंग के पहले 1 घंटे और 1 घंटे 45 मिनट या 1.5 घंटे के पहले खाना। ओके, 1 घंटे से पहले ही खाना, उसके बाद अच्छे से डाइजेस्ट होगा। उसके बाद ज़बरदस्त ट्रेनिंग करना। इसमें हमें थोड़ा साल्ट भी डाला है, तो ज़बरदस्त पंप आएगा ट्रेनिंग करते टाइम। और ये अभी मैं इसको खाऊँगा, उसके बाद हम जाएंगे एंड नीचे ट्रेनिंग करेंगे। पहले हमारा इधर ही जिम था, दिखा दो। सो उसके बाद से
ट्रेनिंग करने टाइम हमको खाने के बाद नीचे आना पड़ता है। पहले क्या होता था, खाते थे हम, ओके, उसके बाद नीचे जाके थोड़ा टाइम बैठते थे, उसके बाद सीधा आके ट्रेनिंग करते थे। बट अभी क्या होता है, नीचे जाना पड़ता है, मतलब थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, उतना तो नहीं, 2-3 मिनट का ट्रैवल, 2-3 मिनट भी है यहाँ से, 1-2 मिनट, तो वही है। ओके, अभी खाएंगे, उसके बाद जाएंगे एंड ट्रेनिंग करेंगे, तो सीधा मैं आपको ट्रेनिंग के मिलता हूँ। बट पहले आप लोग देखो खाने हुए रात दुकान से कैमरा रहते हैं, 3-3 बजे तर जाओ, अब मैं खाइरहन्छु। I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, yo, give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. And I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you want it. I just do this shit cause I know that I want it. I could give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight, gotta play, that's my fucking way, home. Y'all can sit back and think you are the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny. And I will never sleep till I make it, then I'll rest in peace. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. With the best, you fucking with NEFFEX. Yeah. I don't even know what else to say. I'll let that 808 right out though. Yeah. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask.